अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आज हम नई वीडियो के साथ हैं और हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 1.1 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस चैप्टर है और उसका क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो कंप्लीट स्क्वायर के साथ हम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व कर रहे हैं और क्वेश्चन 3 का पार्ट 6 करना है आज हम लोगों ने। सो वेलकम अगेन टू एजुकेशन प्लैनेट। चलें जी स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोगों ने पिछली वीडियो नहीं देखी तो उसे जाके वॉच कर लें, मैं आई बटन पे उसका लिंक डाल दूँगी, क्लिक करें और उसको वॉच कर लें। सो लेट्स स्टार्ट। वी आर डूइंग कंप्लीटिंग स्क्वायर एक्स स्क्वायर। आज की इक्वेशन के अंदर हमारे पास यहाँ पे कोई भी फैक्टर नहीं है, सो हमें फर्स्ट स्टेप नहीं करना जिसमें हम फर्स्ट एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट से इक्वेशन को डिवाइड करते थे। सो -2 हमारे पास फॉर्मूले का आ जाएगा और यहाँ पे हम क्या लिखेंगे 1, देन वी गेट दिस टर्म। अगर हम यहाँ पे 1 ही राइट कर दें तो हमारे पास ये वाली टर्म आ जाएगी। सो आवर क्वेश्चन इज वेरी इजी। -195 और 1 स्क्वायर हमें यहाँ पे सब्ट्रैक्ट भी करना इक्वल्स टू 0। अब हमें क्लोज करना है स्क्वायर, तो x -1 स्क्वायर -195 -1 स्क्वायर इज इक्वल टू 0। x -1 स्क्वायर -1 का स्क्वायर हमारे पास 1 ही होता है, तो हम इसको डायरेक्ट 196 लिख लेते हैं। माइनस माइनस साइन माइनस आएगा और वैसे हमारे पास प्लस हो जाएगा। अलजबरा के रूल तो आपको आते ही होंगे। सो x -1 स्क्वायर, ये इधर माइनस हो रहा है तो उधर जाके प्लस हो जाएगा। अब हमें क्या लेना है, अप्लाई स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। सो हम स्क्वायर रूट अप्लाई कर देते हैं। x -1 इज इक्वल टू स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा और 196 का स्क्वायर रूट हमारे पास क्या आएगा +-14। सो वी हैव टू सॉल्व वंस विद +14 एंड x -1 इज इक्वल टू -14। x इज इक्वल टू, ये 1 इधर माइनस हो रहा है तो इधर जाके प्लस हो जाएगा, 1 + 14 एंड ऑल्सो हेयर -14 + 1, so we get 15 and here we get -13. So we get the answer -13 and 15. Part 7 of completing square is what? -x square plus 15/2 is equal to 7/2x. So now first we have to shift this term either to here, -x square minus 7/2x plus 15/2 is equal to 0. So x square, यहाँ पे हमारे पास कोई भी कोफिशिएंट नहीं है, सो हमें डिवाइड नहीं करना, but here we have minus sign. So first we have to divide this equation. Divide equation by -1. If we divide by -1, we get here x square plus 7/2x and -15/2 is equal to 0. Now x square plus 2 formula, and we have to make this term. So if we write 7/4, 2 2s are 4 and we get 7/2x. 7/4 square we have to add -15/2 and we have to subtract
ऑल्सो -7/4 स्क्वायर। ये देख रहे हैं स्टूडेंट्स, आपके लिए फ़ैन ऑफ किया हुआ मैंने। So next we have to close the square. X plus 7/4 square minus 15/2 minus 7/4 square is equal to 0. So x plus 7/4 whole square, इन दोनों को इधर शिफ्ट कर देते हैं तो हमारे पास प्लस बन जाएंगे। 15/2 प्लस 49/16, हमने इनका स्क्वायर जो है अप्लाई कर दिया। 7 का स्क्वायर हमारे पास 49 होता है और 4 का स्क्वायर 16। नाउ वी हैव टू टेक एलसीएम। 2 8 जा 16, 2 8 जा 16 and 8 15 जा 120, but 120। x plus 7/4 whole square, x plus 7/4 whole square is equal to 169/16. Now we have to take square root. We have to apply square root on both sides. So we get what? X plus 7/4 square root is equal to 169/16 square root। square root square को कैंसिल कर देगा। We get x plus 7/4 is equal to प्लस माइनस 169 का स्क्वायर रूट 13 होता है और 16 का 4। Once we have to solve it with plus 13/4 and once with minus 13/4. So let's, एक दफ़ा हमें प्लस के साथ सॉल्व करना है, एक दफ़ा हमें माइनस के साथ सॉल्व करना है। So we get what? x is equal to -7/4 plus 13/4 and x is equal to -7/4 and -13/4. So here we get -7 plus 13/4 and here we get what? -7 minus 13/4. So we get the answer 6. We get the answer 6/4 and here we get -20/4. Simplify कर लेते हैं। 3/2 and here we get -5. So we get the answer -5 and 3/2. What the answer? -5 and 3/2. So part 8. Here also we don't have any coefficient of x square, so we have to start by completing square। x square plus 2 फॉर्मूले का x यानी कि a b हमें ऐसा बनाना है कि हमें यहाँ पे 17 लाना है। So we can write 17/2. If we write 17/2, this 2 will be cancelled by this and 17x we get. So plus 17/2 square हमें ऐड करना है plus 33/4 and हमें 17/2 square subtract भी करना है is equal to 0. Now we have to complete the square। x plus 17/2 square plus 33/4 minus 17/2 square
is equal to 0. X plus 17 by 2 square. Now we have to shift these terms to opposite side. We get minus 33 by 4 and plus 17 by 2 square. X plus 17 by 2 square is equal to minus 33 by 4 and plus 17 square is what? 256. Is it? No. 89. 289. 289. 289 by 4. Now we have to take LCM. Minus 33 plus 289 by 4. X plus 17 by 2 square. X plus 17 by 2 square is equal to what? You have to solve this. We get 6, 5 and 2. By 4. Now we have to take square root.